Welcome back, learners. So today we are discussing acts and policies, and in this topic, in the last session we were discussing about the Act 2001, Energy Conservation Act. Before we move to further in this acts and policies, I would like to request our receiving centers at regional centers and the study centers that if the students are there, then encourage them to ask the questions if they have some doubts or queries regarding these presentations. Any question, if any question comes to their mind, then they are free to ask the questions. And these phone numbers of the studio are displayed in the last session also, and in this session also these will be displayed on this screen, so they are free to ask the questions. Secondly, I would like to know that how many students are present there at the different centers. It will be the information which is for my use, and also the Ministry of Power requires this information, that how many students are attending these programs. So now I would like to request to Mrs. Anjali Chandra to continue on the discussion on the acts and policies. Over to Chandra. Thank you, Mr. Bhardwaj. Welcome back, students, to this session on acts and policies. We were discussing the Energy Conservation Building Code. So in this we had said that this is to be applicable to new buildings having connected load of 500 kilowatt. But nothing prevents you from studying this Energy Conservation Building Code and taking ideas for modification of your own house also. Energy conservation can be done at each and every level. Though the Act says it is applicable to 500 kilowatt and above buildings, you can modify your own house. You can suggest to your friends how to modify their houses, and people who are constructing new houses especially, they should take tips and guidelines from this Energy Conservation Building Code to conserve energy. And many people have done so. I think Mr. Verma can explain that quite a few people have taken tips from this Energy Conservation Code. And the Energy Efficient Building Code is at the moment applicable to only commercial buildings. Commercial buildings having a connected load of 500 kilowatt or more. But as you rightly say, that there is no ban of using the guidelines and the recommendations which this building code is making for any other building as such. It is made mandatory for the commercial buildings because the commercial buildings consume quite a large part of the power, and therefore we must save a larger part of energy saving which are made. It's rather difficult to make it mandatory for the residential sector, because each individual house is different, and how to control it, how to regulate this is a problem in front of the government. Unless a mechanism is found out of approving the building plans in a transparent manner, again the Inspector Raj should not be there. Somebody should not be harassed for approval of the building plan for incorporating the energy conservation measures in that. This is what I want to say. Then we come to the Electricity Act 2003, in the posts which brought in reforms in the country. And this Electricity Act 2003 was an attempt to harmonize and rationalize the existing laws. The existing laws, as we have discussed already, were the IE Act 1910, the Electricity Supply Act 1948, the ERC Act 1998. So all these were brought together under the Electricity Act 2003 to stimulate discipline in the sector, and this was brought into force with effect from 10/6/2003, that is 10th June 2003. The main features of the Electricity Act 2003 were to create liberal framework for power development, facilitate private investment, de-license generation, create competitive environment. That was a very important plank of the Electricity Act 2003. Until this act was mandated, there was no competitive environment. There was no act specifying competition in the sector. It was a monopoly sector. Then stringent provisions for theft of electricity,
The earlier provisions were not so stringent, they were made more difficult, and now electricity theft has been made a cognizable offence under this Act. Empowers state to restructure SCBs, mandates creation of regulatory commission. This was also in the ERC Act 1998, but now every state, it was made mandatory for every state to have regulatory commissions. This recognizes power trading as a licensed activity. You can do power trading also. Open access in transmission and distribution was mandated. These are the main features of the Electricity Act 2003, and which was a very historical and great act which was brought in. Then came the National Electricity Policy. The main feature of the Electricity Act 2003 is that the government control has been removed. It is government is playing a part of more of a facilitator, and is the control in the form of issuing a license, control in the form of approvals from the, for example. Yeah. Yes, please speak, Tripura. Yes, please speak. From Pritampura Center. Acha, Pritampura, yes. Sir, we are 4 students here right now. Reduce the volume of the TV. Please reduce the volume of the TV. Yes, please. Yes, sir. Now it's okay? Yes. Yes, please speak. Sir, actually, we are very pleased to know that IGNOU is conducting this course, and it's a very valuable course. Now there is a slight doubt about the issue, one issue. Right now, madam, in the last session said that I think there is still echo, sir, right? Yeah, still that I think volume is high. Please reduce little bit volume. Yes, please speak. Yeah, please speak. Now the issue is that actually there is a doubt, the madam in the last session said for conservation in some appliances, they are giving ratings, star ratings, yes. Star 1, 2, 3 and 4. And 5. 5, up to 5. So 3, 4 and 5 already given. But the thing is that कि जो ये star ratings दे रहे हैं, to what extent we are ensured that the quality is not compromised. ऐसा है जैसे star 1, 2, 3, maybe for example AC या fridge है, वो low efficiency items है कि अगर star value 2 या 3 होंगे, तो naturally the output will be also less. Is it so? No. Let me clarify your doubt. जब स्टार रेटिंग देते हैं तो स्टार 1, 2, 3, 4, 5 एफिशिएंसी के लिए दिया, लेकिन साथ में हमने जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से जो जिस स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बनते हैं, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया. तो वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो उनको फॉलो करना है, साथ में ये एनर्जी एफिशिएंसी को लाना है. इसलिए quality of product will not go down because they will have to follow say the voltage and ampere standards. There are standards for manufacture, कितना शीट उसको लेना है, कितना लाइफ है, कितना थिकनेस उसको लेना है. तो वो सारी चीजें को किसी ने रिलैक्स नहीं किया है, लेकिन एफिशिएंसी का एक ओवरराइडिंग क्लॉज उसमें है कि आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड तो फॉलो करेंगे, और ये मिनिमम एफिशिएंसी को वो फॉलो करेंगे. ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में भी एफिशिएंसी है, लेकिन ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का स्टैंडर्ड है, ये एक ओवरराइडिंग स्टैंडर्ड है विच बिकम्स मैंडेटरी फॉर देम टू फॉलो. इसलिए आपका ये ख्याल कि उसकी कोई क्वालिटी खराब हो जाएगी, वो बात ठीक नहीं है. And just to add that making a thing energy efficient does not mean the lowering of the quality, because just consumption of the energy is not the measurement of the quality of a product. That if an equipment consumes more energy, it will be more good or better quality standard, and or if it will work in a better way to provide that service, it is not the measurement actually. So here the thing is to make the things energy efficient. Means there may be some fittings or part of that equipment which are consuming more energy without performing the
purpose for which it is made. So this is the purpose here, to make the things or equipments energy efficient. But as Mr. Verma informed, there is no compromise on the other standards that are set by the Bureau of Indian Standard, BIS. So there is no question of making the things energy efficient. Means the higher star rating does not mean that there will be any compromise on the quality. मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे रेफ्रिजरेटर है. अब रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी कम है जो मार्केट में मिल रहे थे, अभी तक जो मिल रहे थे, कहीं कहीं अभी भी मिल रहे होंगे. वो क्यों कम है कि उसमें उन्होंने कंप्रेसर जो है वो एक लो एफिशिएंसी का लगाया है. ऐसी बात नहीं है कि हाई एफिशिएंसी का कंप्रेसर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो हाई एफिशिएंसी कंप्रेसर उसमें नहीं लगाते हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है. अब उसमें 100 रुपया, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, मान लीजिए 100 रुपया ज्यादा लगते हैं, वो उसमें नहीं लगा रहे. अब ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का स्टैंडर्ड आने से उनको वो कंप्रेसर उसमें लगाना ही पड़ेगा. एक बात ये है. दूसरा, अब जो गैसकेट एक लगती है, छोटी छोटी चीजें हैं, आप अपने घर में भी अपने रेफ्रिजरेटर को चेक कर सकते हैं. गैसकेट लगती है, उससे लीकेज होता है, अंदर की ठंडी हवा बाहर चली जाती है, तो वो एक वेस्ट ऑफ एनर्जी है. अभी उनको देखना है कि गैसकेट एक अच्छी क्वालिटी का लगाएंगे, उसमें लीकेज नहीं होना चाहिए. और हम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से थोड़ी अवेयरनेस भी ला रहे हैं, कैसे चेक करना है. आप उसमें एक पेपर शीट लगाइए. वो शीट जब आप दरवाजा बंद करते हैं तो शीट खींचना नहीं चाहिए, आसानी से निकलना नहीं चाहिए. वो आसानी से नहीं निकल रहा है, इसका मतलब है कि गैसकेट आपका टाइट है, कोई लीकेज नहीं हो रहा. तो दूसरा, तीसरा चीज क्या है, इंसुलेशन का क्वालिटी. अब रेफ्रिजरेटर का जो साइड्स हैं जहां अंदर ठंडा होता है, उसको साइड से आप टच करके देखिए कि बाहर ठंडा तो नहीं हो रहा ज्यादा, बाहर से बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए. वो ठंडा हो रहा है तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी ऑफ इंसुलेशन अच्छी नहीं है और उसमें से हीट लॉस हो रहा है आपका. एंड इसीलिए वो अब ये ब्यूरो का स्टैंडर्ड आने से, स्टार रेटिंग आने से, वो अच्छी क्वालिटी का इंसुलेशन लगाएंगे, उसकी क्वालिटी ठीक करेंगे, कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ठीक होगा उसमें. ये सब चीजें ही करने से उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. तो इसमें बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी. Yes, Lucknow, please speak. Hello, I am calling from Lucknow Regional Center, and we have 8 students of APCDM program, and they would like to something from. Yeah, yes, please. Hello. Yes. Hello. Yeah, please speak your question. I am Sanjeev Bhaskar calling from Lucknow, and I am working as a control officer in SLDC UP. I want to ask a question. Is government is planning to form an international grid with the help of the nearby South Asian or other countries? International grid. इस बारे में डिस्कशंस होते रहते This is हैं. my question. हाँ, ये इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं नेबरिंग कंट्रीज से. और डेफिनेटली अगर कमर्शियल कंडीशंस हमारी सेटल हो जाएं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यही सब हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, SAARC countries. या सार्क कंट्रीज जो हैं, उसमें अगर कमर्शियल कंडीशन सेटल हो जाएंगी तो ये डेफिनेटली एक इंटरनेशनल ग्रिड, हम वी विल बी कनेक्टेड विद द नेबरिंग कंट्रीज. इस तरफ अप्रोच जरूर है. ये खाली ग्रिड कनेक्शन में ही नहीं है, और बहुत सारे एरियाज हैं. हम अपने स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज करना चाहते हैं, अपनी टेस्ट लेबोरेटरीज को हार्मोनाइज करना चाहते हैं. कि उसका फायदा ये होगा कि जैसे हमारे यहाँ कोई इक्विपमेंट बना और टेस्ट हो गया, मान लीजिए CPRI बेंगलोर में, तो अब श्रीलंका में या पाकिस्तान में या ढाका में उस चीज की आवश्यकता है. अगर हम दोनों के स्टैंडर्ड्स एक ही हों तो उसको दोबारा से टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है. कोई हमको स्विचेस चाहिए, मान लीजिए बांग्लादेश से आ रहे हैं, हमारा उनका स्टैंडर्ड एक ही होगा तो उनके मैन्युफैक्चर्ड आइटम उस कंट्री में टेस्ट हो जाएंगे, तो हमको भी दोबारा टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है. तो ये हार्मोनाइजिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स के बारे में बातचीत चल रही है. दूसरा, ग्रिड कनेक्शन की तो बातचीत है ही है. हमारी ग्रिड वैसे कनेक्टेड है, भूटान से कनेक्टेड है, नेपाल से कनेक्टेड है, और पाकिस्तान से भी हमारी बातचीत होती रहती है. कहीं कहीं कमर्शियल एरियाज में हम लोगों का एग्रीमेंट नहीं हो पाता है किसी वजह से, तो उसको जैसे ही वो हो जाएगा तो हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे. ऐसे जैसे यूरोप में ग्रिड बना हुआ है, अभी तो यही सिस्टम है कि हमारी बाउंड्रीज जो हैं, बाउंड्रीज आर लाइकली टू बिकम मीनिंगलेस, because the development is taking place based on the economical development. The boundary will remain, geographical boundaries will remain, but then the interconnection in the power sector, etc. will be there. Yes. Yes, please speak. Hello. Yes. Hello. Yeah, please speak. हाँ. Hello. Hi. इग्नू सेंटर रीवा में 4 MPB ऑफिसर्स हम लोग यहाँ पर
आए हुए हैं। Welcome. वर्तमान में जो पॉलिसी बनी है कि 2012 तक हर घरों को बिजली मिलेगी, सार्वजनिक तौर पर ये पॉलिसी काफी अच्छी लगती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्युत की व्यवस्था है उसको ये सब विद्युतीकरण होने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों का एनर्जी लॉस लगभग 70% की स्थिति में पहुंचता है। विद्युत में एक 2003 के लगातार प्रावधानों के बावजूद एवं शासन स्तर पर भी उस पर विशेष ध्यान देने के बावजूद विद्युत चोरी के प्रकरण बनाए जाने की स्थिति के एवं न्यायालयों की कार्रवाई पर भी सामान्य जन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि विद्युत जो है शासन विशेष प्रयास के साथ पैसे दे करके हमें दे रही है और हमारी नैतिक जवाबदारी बनती है कि हम उसका सदुपयोग करें। क्योंकि इस बारे में राजनेता भी काफी स्तर से सही संदेश देने में असमर्थ रहते हैं और विद्युत का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। इंडस्ट्रियों के मामले में तो यह है कि चूंकि इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो निश्चित तौर पे इस बात का ध्यान रखती है कि एनर्जी कंजर्वेशन हो, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और इस पर विशेष कार्य करने की जरूरत है, अन्यथा एनर्जी कंजर्वेशन का सपना जो है अधूरा रहेगा। धन्यवाद। Thank you. Mr. Verma, would you like to comment? Okay. We'll take this call from Bilaspur. Please speak, Bilaspur. Yes, speak. You can respond later. Yes, please. Yes, please speak. Sir, this is Naveen Kumar calling from Science PG College, Bilaspur, Chhattisgarh, sir. Yes. Sir, my question is that before pre-reform stage, we have high transmission and distribution losses. Yes. And state utilities losses is 26,000 crores. Yes. After this electricity act 2003, how far it was reduced? Yes. And we are go on increasing the power distribution capacity, that we are increasing the number of power plants in 11th and 12th 5-year plan. How far we are researching on reducing the transmission and distribution loss, and I want the statistics of transmission and distribution losses. Should I respond, sir? Okay, sir. Thank you. Okay. About 24,000 of them Yes. respond. Yes. 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 Yes, please speak. I am from Rajghat, Rajghat. Igloo Center Rajghat, where Yeah. there are around 24 students. Yeah. I am K.S. Bandyopadhyay. Okay. Yes. Sir, I wanted to know what is the difference between ERPC and EPCC. ERPC and Means Empowered Power Committee presently they have set up. Earlier it was regulatory electricity energy accounting, okay. Okay. Sir, Power Committee, National Power Committee. ERC and EPCC. Yes. Yes. And second question is that when the distribution will be operational in the state, now in the regional state, availability based tariff is there, that is among only the central sector, not in the state sector. When this availability based tariff will be applicable in the state sector? Okay. You can respond some of them. Regarding transmission and distribution losses, the transmission and distribution losses in 2001-2, that is in the pre-reform stage, were around 34%, and they have reduced to 31% in 2005-6. The AT&C losses have reduced from 38% to 34%. AT&C means aggregate technical and commercial losses. Many steps are being taken which will be discussed later for reduction of transmission and distribution losses, and we'll discuss this in detail in the ensuing lectures. But at the moment we can tell you that losses have both the aggregate technical and commercial losses as well as the transmission and distribution losses have reduced in the country. Though there has not been very substantial reduction, but transparency is coming about, and the commercial losses which stood at 26,000 crores have now come to a level of 19,000 crores,
and with respect to turnover, they are still less. So there is a definite reduction in the commercial losses of the power utilities. As regards rural electrification, there is a rural electrification policy, and the lines, the rural lines are being extended under the Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana to bring electricity to all the rural consumers. So, and by the end of 2012, we will have electricity to each and every consumer, and power on demand by 2012. And what was the third question? रीवा से एक सजेशन था, कोई खास क्वेश्चन नहीं उठाया था, लेकिन उसमें से ये बात निकल करके आ रही है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में वो कंसर्न थे और कह रहे थे कि इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट एक्शन थेफ्ट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं हो रहा. तो एक तो बात यह है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसके बारे में, और एक्शन सरकार उसके बारे में ले रही है. मतलब है कि हम रूरल इलेक्ट्रिसिटी बैकबोन बना रहे हैं, बिजली वहां तक पहुंच रही है, और ऑलरेडी पावर ग्रिड, एनएचपीसी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है बनाने के लिए, उसमें प्रोग्रेस काफी चल रही है. तो ऐसा नहीं है कि सरकार उसके बारे में एक्शन नहीं ले रही है. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी MNRE ये एक्शन ले रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन सिस्टम गांव में लाया जाए, जो गांव दूर दूर के हैं जहां पर के बिजली नहीं जा सकती, रिमोट विलेजेस जहां ग्रिड नहीं जा सकती. तो उसके बारे में 5000 मेगावाट बिजली का प्रावधान इसमें है, तो उसके बारे में भी एक्शन हो रहा है. अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है, ग्रुप बनाया है, और उस ग्रुप में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को रखा है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को रखा है, हमारा जो CA उसको हेड करते हैं, और दूसरे कॉर्पोरेशंस उसमें हैं, ताकि वो प्रोग्राम मॉनिटर हो सके कि वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि 11-12 तक सब जगह ये बिजली सब लोगों को पहुंच जाए. जहां तक थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात है, ये देखिए ये सब्जेक्ट अलग है, थेफ्ट अलग है और इलेक्ट्रिफिकेशन एक चीज अलग है. थेफ्ट होने से नुकसान होता है यूटिलिटी को, उसके बारे में अभी एक अमेंडमेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में आया है कि थेफ्ट के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट उन्होंने पनिशमेंट दे दिया है. तो आपको सजा भी हो सकती है, जेल हो सकती है, और फाइन भी हो सकता है. कॉग्निजेबल ऑफेंस उसको बना दिया है, और पुलिस स्टेशन डायरेक्टली इसमें एक्शन लेगा. पहले तो ये था कि आपको कहीं फाइल करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, किसी को एफिडेविट देना पड़ेगा, वो मुश्किल कम्बरसम प्रोसीजर था. उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में भी इसका एक कम्बरसम प्रोसीजर ही था कि रेगुलेटरी कमीशन के पास जाना पड़ेगा, कंप्लेंट करनी पड़ेगी. लेकिन अभी तो एक डायरेक्ट एक्शन है, और जो नॉर्मल पुलिस स्टेशन होता है वहीं से इसका एक्शन हो जाएगा, और सजा भी होगी उसमें, और उस सजा को कोई माफ भी नहीं कर पाएगा. उसमें ऐसा है कि उस सजा को माफ नहीं कर पाएगा, डिसीजन हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा. तो ऐसा प्रावधान अगर एक्ट में कर दिया गया है तो हम समझते हैं कि जरूर इस थेफ्ट में कमी आएगी. थोड़ा पता इससे भी लगता है कि जो टोटल कंट्री के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, आज का जो फिगर है वो 30% के से थोड़ा सा कम हो गया है. पहले ये मैं AT&C लॉसेस की बात नहीं कर रहा, पर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, जिसमें कुछ कमर्शियल लॉस भी इंक्लूडेड है, वो हम निकालते हैं कि कितनी बिजली आई और कितनी बिजली हमने मीटर करी. उसके पैसे आए कि नहीं आए दूसरा सवाल है. कितनी बिजली मीटर हुई जो कि हमने बांट दी, और कितनी बिजली हमने रिसीव करी थी, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है उसको हम T&D और कमर्शियल लॉस बोलते हैं. ये लॉसेस भी कम आ गए हैं. ओवरऑल कंट्री के जो लॉसेज हैं वो 30% से कम है आज की तारीख में. लेकिन हाँ, ये बात सही है कि किसी किसी स्टेट में ये लॉसेज बहुत ज्यादा हैं. ये 60% भी है, 70% भी है, कहीं 22% भी है, तो 22% से कम भी है. तो एवरेज कम आ रहा है. लेकिन जहां जहां ये लॉसेज ज्यादा हैं वो वाली स्टेट कुछ छोटी भी हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है या नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट्स हैं, तो उससे हमें इतनी ज्यादा चिंता का विषय भी नहीं है. जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, या ये पंजाब है, आंध्रा है, हरियाणा है, इसमें ये लॉसेज कम आ रहे हैं. इस बारे में एक्शन हो रहा है. तो हम लोगों को काफी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए इस बात से कि जब से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आया है, तो अब ये कोई ऐसा मैजिक बैंड नहीं है कि आज ही एक्ट आ गया तो आज ही ठीक हो जाएगा. इसमें सब लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, जनता का भी चाहिए, पब्लिक का भी चाहिए, और यूटिलिटीज का भी चाहिए, और रूल रेगुलेशन तो गवर्नमेंट बनाने का काम है ही है. तो इस बारे में एक्शन हो रहा है, और बिजली में काफी सुधार हो रहा है आज की सिचुएशन में, और 5 साल पहले की सिचुएशन में काफी फर्क है, मैं ये कहना चाहता हूँ. And as far as that this regional power reduction in this losses is concerned, so this is related to the reforms, and these reforms are related to the changing of the some infrastructure also. So it will take time.
Yes. And it is though it has on rolls, it is rolling on, and but it will take some time. So for the utilities to change its system and the infrastructure. अभी काफी चेंज आ गया, अभी इसमें काफी चेंज आ गया और काफी चेंज हो भी रहा है. देखिए, इसमें सरकार ने कहा था कि अनबंडलिंग ऑफ द यूटिलिटीज होना चाहिए. कुछ स्टेट्स ऐसे हैं वो स्ट्रांगली फील करते हैं कि अनबंडलिंग होना कोई जरूरी नहीं है, और वो लोग अच्छा कर रहे हैं. वेस्ट बंगाल इसमें एक है. वेस्ट बंगाल ने अनबंडलिंग नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट सेंटर अलग अलग बना दिया. जनरेशन कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी का एक प्रॉफिट सेंटर अलग बनाया है. एक होल्डिंग कंपनी WBSE भी अभी भी है. केरला जैसे है, केरला में सिचुएशन जनरली अच्छी है, पंजाब, पर वो लोग थोड़ा सा अपोज कर रहे हैं अपने किसी वजह से, लेकिन वो अपोज रिफॉर्म्स को नहीं कर रहे हैं. वो एक रिफॉर्म का एक पार्ट जो है, हाउ टू एग्जीक्यूट ए रिफॉर्म, उसको थोड़ा सा अपोजिशन उसमें है. लेकिन कंट्री में ओवरऑल by and large majority of states have already adopted this reform process. And the last question was from Delhi, in which he was asking about the ERPC, EPC, regional and power committees. tariff in states deciding ABT tariff in state. आप बताएंगे EPC? So what I think as I understand it, he is talking about regional power committees. The regional electricity boards have been converted to regional power committees, They have been which renamed. will now be called regional power committees, and they will do the energy accounting and whatever were the functions of the regional electricity boards. They have been renamed as regional power committees. And regarding ABT, the ABT has been implemented in interstate, that is interstate and drawal of generation from central sector projects, but it will soon be implemented in intrastate for the state as a whole, drawal from the state projects. So this is under implementation and it is likely to be implemented soon. Some states have already started work on this. Thank you. किसी I hope ने this answers your एक question. प्रश्न में 11वें और 12वें प्लान की बात करी थी कि हम लोग इतना कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, तो इसका कुछ फायदा होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है, या ये होगा कि नहीं होगा. इस बारे में कल भी मैंने बताया था कि हमने 78,500 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो हम प्लान कर रहे हैं 11 प्लान में, उसमें से 50,000 मेगावाट से ज्यादा के ऑर्डर हम लोगों ने प्लेस कर दिए हैं और वो प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है. ये एक बड़ा सेटिस्फेक्शन की बात है. और जो 20,000 मेगावाट करीब ऑर्डर रह गए हैं, मैं तो बहुत उम्मीद है मुझको कि मार्च 2008 तक ये सारे ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे. तो इसीलिए इसमें कोई ऐसा नहीं. अभी कल भारद्वाज साहब ने बताया था कि जो हमारा लर्निंग हुआ 10th प्लान से, उसके बारे में हमने सारा एक्शन ले लिया है. और कुछ एक्शन हम ले रहे हैं. ये ऐसा नहीं है कि किसी एरिया की हम नेग्लिजेंट कर रहे हैं. एक्शन पूरी तरीके से हो रहा है और हमें, मैं तो यही कॉन्फिडेंस देना चाहूंगा आप लोगों को कि Yeah. Yes, Rachi, please speak. Yes. Please speak. Hello. Yeah. Hello. Yeah, please speak. Hello. Yes, please speak. Hello. Yes, please ask your question. We are listening you. We are listening you. Please speak. Hello. उनको आवाज नहीं जा रही मेरे लगता. You please speak your question. Hello. Yes. Good morning, sir. I am calling from Ranchi. Yeah, welcome. Hello. Yes, please speak your question. Please ask your question. Hello. Please ask My your first question. question is, Yeah. what is the functional difference of CERC and SERC? Okay. Okay. And my second question is, Hmm. how can we obtain the capacity of transformers and motors in minimum time with the help of minimum means? Third, the candidate enrolled in July 07 session can fill the examination form of term end examination December 2007. Thank you and over. Okay, let me respond to the last part of the question. Every student of July batch is eligible for appearing in December 2007 examination. For this you have to fill in the examination form. I have sent you letters in which examination form is there, and this time you have to fill in a new examination form. University has devised a new examination form because there is some change in the rules and regulations regarding appearing in the examination.
Earlier in university there was no examination fee, but university authorities has decided now that for every program, for every student, whenever he or she appears in the examination, along with the examination form, there will be an examination fee of rupees 50 per paper. Paper we call in our university at IGNOU as course, but in the conventional system there is a different terminology. Course, generally whatever course we talk in conventional system, we talk about as a program. We speak it as a program. So ACPDM is a program, and you have in this program 3 courses: BE001, BE002 and BE003. So you are required to submit a bank draft of rupees 150 along with the examination form, and I have already posted you the examination form along with the letter in which there is a schedule of the examination, means dates of the examination are given there. In December the examination will be conducted, and the dates are 17th December, 26th December and 31st December. So 3 examinations will be there on these 3 dates. You are required to fill in the examination form. This is compulsory, and along with that examination form you have to submit a bank draft of rupees 150 in favor of IGNOU payable at New Delhi, and you will send this examination form and the bank draft to Registrar Student Registration and Evaluation Division at Maidangadi, New Delhi. Everything is written in that letter, so it will reach you within 2-3 days, and you please fill in that examination form. Every student is eligible of the July batch for appearing in this December examination. Regarding this difference between the CERC and SERC, another part, I would like to request Mrs. Anjali Chandra to respond. Well, we had earlier. Yeah, first we will take this call. Okay. Yes, please speak, Jabalpur. Yes, Jabalpur, please. Hello? Yes. Hello? Yes, please speak. Sir, my question relates to Yes. Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikरण scheme. Okay. Yes. Although it appears quite decent and populistic idea, Yes. if we don't give thought to our sub-transmission infrastructure, will it not further deteriorate our sub-transmission system? Yes. Which system? That's okay. Sub-transmission. Sub-transmission system, sir. Yes, yes. Yes. Any further query? सर अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हम बढ़ाते जाएंगे हाँ. तो हमारे सब ट्रांसमिशन लॉसेज और बढ़ेंगे Let me answer that question. और क्वालिटी ऑफ सप्लाई भी कम होगी सर. जैसे आपने बिल्कुल कहा कि अगर सब ट्रांसमिशन, Okay. we'll take the call from Ahmedabad first and then answer your question. Yes, please speak, Ahmedabad. There are some basic questions I want to ask regarding the center first. That yesterday I came to the center. Okay. I am the only student over here. Okay. There is nobody who was present in the center except the security. Okay. And when I talked to the phone to the authority by the security, they were not knowing that the program is today. That is on the Saturday. Okay. So I am very disappointed yesterday. Yeah. But thankfully the security person has turned on the TV and I was the only person attending this program. Okay. I came from Baroda, 125 kilometers away from Ahmedabad. Okay. The other thing is, I have still not received any material or any iCard from the center. Okay. My name is Chirag Shah. Okay. And I have received your email dated 21 June 2007 Okay. that your application form has been received and acknowledgement card will be sent to you later. Okay.
So any query regarding this discussions? Any other query regarding the discussions also? Yeah, other query is, Yeah. I want to know where this Energy Conservation Act 2001 will be available, then Electricity Act 2003, Yes. and I want to know the website of the Energy Conservation Conservation Act. Okay. Okay. That's all. Okay. Let me first respond regarding that system. We sent this schedule to our each and every regional center well in advance, and these I requested the officials there at regional centers to at least inform these candidates of the ACPDM program regarding the schedule, because though I sent the letters to these students of the ACPDM program, but I was in a doubt that there may be a little bit delay in reaching these letters regarding the schedule of their program. So I requested the honorable officials at every regional center, sub-regional centers, to please inform regarding the schedule to the students. But I don't know how, unfortunately, at regional center Ahmedabad there was no information. Maybe that email ID may be wrongly typed in the mail, and mail might have bounced. Otherwise, this may not have been the case. And regarding I will talk to the regional director there at Ahmedabad, and I'll assure you that in future you will not feel any problem. Regarding the study material, I would like to communicate that the study material has been dispatched from here, and you will receive it shortly, because I have got reports from many corners that students have received this material, and some are in the process of receiving it. So one thing is there that part of the material to students, some packets, around 150 packets, were wrongly sent from here by registered postal, book parcel. So these particular 150 or so packets will reach to the learners within 7 or 8 days. But the packets which were sent by speed post, they have already reached to the students, and there are some addresses or some locations where there is no speed post service, so we were compelled to send these by registered post. So these particular packets will also take some 7-8 days to reach. Regarding the students belonging to this Ahmedabad region, means the whole of the I think whole of the Gujarat state, there was some problem in processing of applications. Some of the applications I received at New Delhi, here in our School of Engineering and Technology, and this time the system was such that these applications were to reach at our regional centers, and our regional centers were supposed to process these formalities and complete the admission formalities. So whatever applications I received from Gujarat at New Delhi, I sent them to regional center Ahmedabad, but there was some problem there at regional center Ahmedabad in finalizing these admissions, and around 55 candidates are there. So I think they have completed the formalities regarding these admissions, but these 55 students may receive their study material late, because we have not yet received, means that our student registration and evaluation division has not received this data of 55 students yet. I'll be in touch with the regional center Ahmedabad tomorrow when the working day is there on Monday, and I will ensure that this data reach us as soon as possible, and you will get the study material very soon. But in the meantime, you can take the advantage that we have this material in PDF format at our website www.ignou.ac.in, and also at the DRUM website
Right now I don't have that email, this website address of the drum. I'll inform you rather in the next session. I'll inform you that the website 8 blocks in PDF format are there, so you can take advantage that you can download these relevant blocks which we are discussing here today, or we will be discussing in the next week, Saturday, Sunday. You can download these and take benefit of these. And in the meantime, you will also receive from us the hard copies of these by post. So now I would like to request Mrs. Anjali Chandra to respond to other parts. Well, first I would like to answer the question on function of Regulatory Commission, the CERC as well as the SERC. The CERC, or the Central Electricity Regulatory Commission, sets the generation tariff for central-owned generating companies, generation tariff for companies supplying power to more than one state, and transmission tariff for interstate transmission of power. Whereas the SERC has to set the transmission tariff within the state, retail distribution tariff within the state, that is for the distribution companies. It has to determine and notify tariff for state generating companies with the state government, clear all new power purchasing agreements, regulate purchase of power. There are some other functions also of the Central Electricity Regulatory Commission, like setting of grid code, for the SERC setting of performance standards, which we will discuss in detail when we come to distribution reforms. Then the question regarding the backup sub-transmission and distribution system for the Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana. जैसे कि आपने कहा, अगर हम लाइन्स एक्सटेंड करते रहेंगे और बैकअप सब ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं बनाएंगे तो लॉसेस बढ़ेंगे और क्वालिटी ऑफ सप्लाई डिटीरियोरेट होगा. सो जब रूरल लाइन्स बना रहे हैं, एक तो हम रूरल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बैकबोन 33/11 केवी सबस्टेशन का भी प्रोविजन कर रहे हैं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना वाली स्कीम्स में. And also we are creating the backup sub-transmission and distribution system under APDRP and the transmission system under other packages. So the government is very conscious about this fact that the backup transmission is required if we are to reduce the losses, and losses should not increase with the increase of the lines under rural electrification being carried out under Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana. Any other question was there? We will respond to the other questions in our next session, because we are coming to the close of this session. So we will respond to the other questions. Certainly we will respond to each and every question, but in the next session. Thank you. So we will meet at 12 o'clock again here. Till then, thank you.